Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C Government College, अजमेर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को PSC पार्ट 1 का साइटोलॉजी का न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपका सेकंड पेपर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? Nucleic acids are present in all living organisms, whether plants, animals or viruses. सभी में उपस्थित होते हैं, living organisms में, plants में और virus में. They are generally associated with proteins to form nucleoproteins. किसके साथ associate होते हैं? Proteins के साथ में और nucleoproteins के निर्माण में मदद करते हैं. Basically, there are two types of nucleic acids. कौन-कौन से nucleic acid होते हैं? There are two types of nucleic acid, namely DNA and RNA. DNA means deoxyribose nucleic acid and RNA means ribose nucleic acid. DNA जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और RNA जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? नंबर 1 शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेसिस एंड नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब हम यहाँ आरएनए की बात कर रहे हैं। Here we are going to see the properties, structure, types and functions of RNA. RNA, ribose nucleic acid. It is a polymer of nucleotides which is made up of a ribose sugar, a phosphate group and bases, nitrogenous bases such as adenine, guanine, cytosine and uracil. बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर्स प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर्स। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। तो आरएनए किसका बना हुआ होता है? राइबोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और नाइट्रोजनस बेसिस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. It is a polymer molecule essential in various biological role in coding, decoding, regulation and expression of gene. क्या काम होता है इसका? पॉलीमॉर्फिक मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। इसका काम होता है कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इस फिगर के अंदर आप RNA और DNA का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। In this figure, ribonucleotides contains the pentose sugar, ribose instead of the deoxyribose found in deoxyribonucleotides. इसमें ribose sugar है और RNA contains the pyrimidine uracil in place of thymine. DNA के अंदर कौन सा पाया जाता है? थायमीन। और RNA में कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजनस बेस। थायमीन is replaced by uracil. Here in this you can see the structure of RNA. It is single-stranded and it contains the nitrogenous bases adenine, guanine, cytosine and uracil. Now, like DNA, RNA is a long polymer consisting of nucleotides. RNA is a single-stranded helical. Single-stranded होता है. The strands has a 5' end and a 3' end. 5' end पे तो फॉस्फेट ग्रुप लगे रहते हैं और 3' end के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं. It is composed of ribonucleotides. The ribonucleotides are linked together by 3' 5' phosphodiester bonds. The nitrogenous bases that compose the ribonucleotides includes कौन-कौन से हैं ribonucleotides? Adenine, cytosine, uracil and guanine. Thus, the difference in the structure of RNA from that of DNA include. अब हम यहाँ देखेंगे DNA और RNA में क्या अंतर है. The nitrogenous bases in RNA are adenine, guanine, uracil and cytosine. इधर यूरेसिल जो है वो थायमीन, डीएनए में थायमीन होता है तो वो थायमीन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है. Thus, thymine in DNA is replaced by uracil in RNA, a different pyrimidine. However, like thymine, uracil can form base pair with
एडिनिन। किससे पेयरिंग होती है एडिनिन की? uracil से. The sugar in RNA is ribose sugar rather than deoxyribose sugar. DNA में deoxyribose sugar पाई जाती है और RNA में ribose sugar पाई जाती है. Next point of difference, the corresponding ribonucleotides are adenosine, guanosine, cytidine and uridine. The corresponding ribonucleotides are adenosine 5-triphosphate, guanosine 5-triphosphate, GTP, and cytidine 5-triphosphate CTP and uridine 5-triphosphate और UTP. अब हम ये पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देखा, अब हम आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे. मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड, बट an RNA molecule may contain regions which can form complementary base pairing where the RNA strand loops back on itself. कहीं कहीं वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पर यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आरएनए जो है जहाँ पे लूपिंग हो गई है वहां पे डबल हेलिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है. इफ सो द आरएनए विल हैव सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स. Clear? Ribosomal RNAs or rRNAs and transfer RNAs or tRNAs exhibit substantial secondary structure, as do some messenger RNAs. Now we are going to see the types of RNA. अब हमने स्ट्रक्चर देखा, इसके बाद हम देखेंगे कितने तरह के RNAs पाए जाते हैं. In both prokaryotic and eukaryotic, there are three main types of RNAs. They are namely rRNA या ribosomal RNA, tRNA और transfer RNA, mRNA और messenger RNA. अब हम एक एक करके एक एक RNAs के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला है मैसेंजर आरएनए. इसको किस तरह लिखा जाता है? एम छोटा और आरएनए कैप्स के अंदर. मैसेंजर आरएनए अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल. जितना आरएनए होता है उसका 5% आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है. मोस्ट हेटेरोजेनस ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए in terms of both base sequence and size. It carries the genetic code copied from the DNA during transcription in the form of triplets of nucleotides called codon. ये इसका क्या काम होता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है. डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है जब इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट विच आर नोन एज कोडॉन. As part of post-transcriptional processing in eukaryotes, the 5' end of the messenger RNA is capped with a guanosine triphosphate nucleotide, which helps in messenger RNA recognition during translation or protein synthesis. और RNA का यूकैरियोट के अंदर जो RNA का 5' वाला जो भाग होता है वो जो होता है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस में कैसे हेल्प करेगा कि 5' एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए इज केप्ट विद द गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड. और इसका जीटीपी का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन मैसेंजर आरएनए रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस. Similarly, the 3' end of the messenger RNA has a poly A tail. अब जो 5' आर्म्स के अंदर तो हमने देखा कैप्ड गुआनोसिन की होती है, जीटीपी की. 3' एंड जो होता है उसके अंदर एक पॉली ए टेल होती है और मल्टीपल एडिनाइल रेजिडुअल एडेड टू इट विच प्रिवेंट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. ये जो चेन होती है ये मैसेंजर आरएनए की एंजाइमिक डिग्रेडेशन को रोकती है. बोथ 5' and 3' end of a messenger RNA imparts stability to the messenger RNA. Now we are going to see the functions of the messenger RNA. क्या कार्य होता है messenger RNA का? Messenger RNA transcribes the genetic code from DNA into a form that can be read and used to make proteins. Messenger RNA carries genetic information from the nucleus to the cytoplasm of the cell. Main function क्या है मैसेंजर आरएनए का? कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, आनुवंशिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मैसेज करता है. Here you can see the structure of the messenger
RNA, where there is a synthetic viral messenger RNA, and the translation process is going on, and there is the resultant is the SARS-CoV-2 viral proteins. The next RNA is transfer RNA or tRNA. tRNA is the smallest of three types of RNA, having about 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड. सबसे छोटा होता है तीनों आरएनए के अंदर ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन. किस में मदद करते हैं? ट्रांसलेशन में मदद करते हैं. वेयर देयर मेन फंक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. मेन इनका काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान. Therefore, they are called transfer RNAs. Each of the 20 amino acids has a specific transfer RNA that binds with it and transfer it to the growing polypeptide chain. Transfer RNA also act as an adapter in the translation of the genetic sequence of messenger RNA into protein. Therefore, they are also called adapter molecules. Now here you can see the structure of the transfer RNA. Transfer RNA have a clover leaf structure, which is stabilized by strong hydrogen bonds. क्लोवर लीफ मॉडल जैसा इसका स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको जोड़ती है between the nucleotides. Apart from the usual 4 bases, they normally contain some unusual bases, mostly formed by methylation of the usual bases. For example, methyl guanine and methyl cytosine. इसके अंदर वो सारे चारों तो नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त इसके अंदर मिथाइल गुआनिन एंड मिथाइल साइटोसिन भी पाया जाता है. These structure loops are formed via hydrogen bonding. ये जो 3 structure loop है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनते हैं. The 3' end serves as the amino acid attachment site. इसका जो 3' end है वो amino acid की attachment site होता है. The central loop encompasses the anticodon. Central loop के ऊपर anticodon का काम होता है. The anticodon is a 3-base nucleotide sequence that binds to the messenger RNA codon. This interaction between codon and anticodon specifies the next amino acid to be added during protein synthesis. अब हम देखेंगे functions of transfer RNA. What are the function? कार्य क्या होते हैं? Transfer RNA brings or transfer amino acids to the ribosome that corresponds to each 3 nucleotide codon of rRNA. The amino acids then can be joined together and processed to make polypeptides and proteins. The next one is ribosomal RNA. The third one is the ribosomal RNA or rRNA. rRNA are found in the ribosomes and accounts for 80% of the total RNA present in the cell. Ribosomes are composed of a large subunit called the 50S and the small subunit called 30S, each of which is made up of its own specific RNA molecules. Different rRNAs present in the ribosome include small rRNA and large rRNAs, which belong to the small and large subunit of the ribosome respectively. rRNA combines with protein and enzyme in the cytoplasm to form ribosomes, which acts as a site of protein synthesis. Basically ये क्या करते हैं RNA? प्रोटीन और जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं और उन जो साइट प्रदान करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. These complex structures travel along the messenger RNA molecules during translation and facilitate the assembly of amino acids to form a polypeptide chain.
They interact with transfer RNA and other molecules that are crucial to protein synthesis. In bacteria, the small and large RNAs contain about 1500 and 3000 nucleotides respectively, whereas in humans they have about 1800 and 5000 nucleotides respectively. However, the structure and function of ribosome is largely similar across all species. Thank you.